Very warm morning to respected director sir, principal ma'am, coordinator sir, in charge, and my dear teachers. Today, in-house teacher training program, and my topic is AI, the game changer in education. So, first of all, I teach you or I tell you about the AI. What is AI stand for? AI stands for artificial intelligence. What is meant by artificial? Artificial means which is made by human. इंसानों द्वारा जो बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं artificial. And intelligence means जो आपका talented होते हैं. तो ऐसा सिस्टम जो कि ह्यूमन द्वारा बनाया गया हो और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब उसका जो है टैलेंटेड वो हो. तो इसी के लिए मेरा टॉपिक यहाँ पर एआई द गेम चेंजर इन एजुकेशन. तो कैसे करके ये जो एआई है ये हमारे एजुकेशन सिस्टम को चेंज करेगा, इसी के बारे में यहाँ पर मैं बताऊंगा. फर्स्ट मैं इसका डेफिनेशन बताना चाहता हूँ. जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि एआई क्या होता है, एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. और इसमें क्या होता है कि इसमें मशीन जो होता है वो लर्न करता है, सीखता है. और जस्ट लाइक ए ह्यूमन, जैसे हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं और फिर हम लोग कुछ काम करते हैं. कोई भी हम लोग काम करते हैं, हम लोग सोचते हैं फिर हम लोग काम करते हैं. जस्ट लाइक ए ह्यूमन की तरह ही एक मशीन डेवलप होगा जिसमें क्या होता है कि वो थिंक करेगा जस्ट लाइक ए ह्यूमन, बट नॉट प्रॉपर्ली ह्यूमन, बट जस्ट लाइक ए ह्यूमन. हिस्ट्री, एआई का हिस्ट्री क्या है? ये जो एआई आया था ये कहां से आया? तो एआई हैज रूट्स इन द 1950s with the dark mouth was considered as the birth of AI. तो ये आपका 1950 से इसका इंट्रोडक्शन हुआ था और यहाँ पर एआई का कांसेप्ट आया. मशीन लर्निंग, जैसे मशीन लर्निंग के बारे में मैंने बताया कि मशीन क्या होता है. ठीक है, मशीन के बारे में जैसे मशीन कंप्यूटर सिस्टम हम लोग जैसे यूज कर रहे हैं, मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, तो अभी ये सारा कुछ क्या होता है, मशीन होता है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है मशीन लर्निंग में, मशीन लर्निंग मतलब क्या होता है, जैसे ह्यूमन हम लोग क्या करते हैं, बचपन से ही हम लोग को जैसा देखते हैं, जैसा सुनते हैं वैसा हम लोग सीखते हैं और वैसा ही हम लोग बोलते हैं. ठीक है, तो उसी तरह से मशीन क्या हो रहा है यहाँ पर, मशीन लर्निंग का मतलब क्या होता है, उसको एक तरह से सिखाया जाता है, उसको ट्रेन किया जाता है और जैसे उसको ट्रेन करेंगे उसके हिसाब से वो बिहेव करेगा. डीप लर्निंग आपका इसमें क्या होता है कि मशीन को जो नेटवर्क से रिलेटेड यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, उसको डीप लर्निंग कराएंगे. ठीक है, नेटवर्क से रिलेटेड होता है यहाँ पर. आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क मतलब जस्ट लाइक ए बायोलॉजी में जैसे हम लोग करते हैं, जैसे ह्यूमन ब्रेन हम लोग को होता है. ठीक है, तो ह्यूमन ब्रेन में क्या होता है, जैसे न्यूरल सिस्टम होता है, हम लोग का नर्वस सिस्टम काम करता है. हम लोग कैसे करके सोच रहे हैं कि हम लोग जैसे देखते हैं तो हम लोग को दिखता है कि हम लोग चल रहे हैं, ट्यूबलाइट जल रहा है या कुछ भी हम लोग देख पा रहे हैं और उसको हम लोग समझ पा रहे हैं, हम लोग सेंस कर पा रहे हैं. तो उसी तरह से यहाँ पर डीप लर्निंग में कंप्यूटर सिस्टम जो बनेगा, यहाँ पर जो मशीन बनता है यहाँ पर उसको डीप लर्निंग कराया जाए. एप्लीकेशंस क्या है? ठीक है, एआई यूज इन अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन इंक्लूडिंग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग डेली लाइफ वी आर टॉकिंग इन इंग्लिश और हिंदी और बंगाली और एनी अदर लैंग्वेज. तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो सिस्टम यहाँ पर डेवलप होगा इसमें क्या होगा कि लैंग्वेजेस का कोई बैरियर यहाँ पर नहीं रहने वाला. जैसे एग्जांपल के तौर पे we everybody use the Google to search some topics or anything in the Google. So वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जब सर्च करते हैं तो हम लोग इंग्लिश में भी सर्च कर सकते हैं और एनी अदर लैंग्वेज में भी हम लोग उसमें सर्च कर सकते हैं. अभी मैं जैसे गूगल के बारे में बताया तो मैं गूगल में ही आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ. प्रीवियसली हम लोग क्या करते थे, जब गूगल को यूज करते थे तो हम लोग को क्या करना पड़ता था, सर्च में टाइप करना पड़ता था और टाइप करके हम लोग को सर्च करेंगे तो हमको उसका टॉपिक रिलेटेड मिलता था. बट नाउअडेज हम लोग क्या हो गए कि थोड़ा सा काम को हम फास्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ पर एक टेक्नोलॉजी जो होता है, देखिएगा आपको वहाँ पर छोटा सा ऑडियो टाइप का बटन मिलता है. तो हम लोग क्या करते हैं, ऑडियो बटन में टैप करते हैं और ऑडियो में टैप करने के बाद हम लोग जो भी बोलते हैं, ठीक है, जैसे समझ एग्जांपल के तौर पर व्हाट इज कंप्यूटर, तो वो क्या करता है, मेरे वॉइस को रिकॉग्नाइज करता है और उसी को वो टेक्स्ट में
कन्वर्ट करके व्हाट इज कंप्यूटर लिखी गया। यहाँ पर इतना नहीं वो स्टॉप नहीं होता है, वहाँ पर भी एआई का टेक्नोलॉजी लगाया गया है कि जैसे ही मैं वहाँ पर बोला व्हाट इज कंप्यूटर, तो उन्होंने क्या किया वहाँ पर उसको कन्वर्ट करके टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया और टेक्स्ट से रिलेटेड व्हाट इज कंप्यूटर से रिलेटेड जहाँ से भी है उसको सर्वर में जो रखा हुआ रहता है वहाँ से खोज करके मेरे लिए लेके आके आपको शो कर देता है। सो वी सी द डेफिनेशन ऑफ द कंप्यूटर। Ethical and society impact. AI is important ethical and society question including concern about bias, algorithm, job, disappointment and privacy. ठीक है, तो AI का हम लोग का सारे फील्ड में यूज होता है, जैसे हम लोग का डेली लाइफ में भी हम लोग यूज करते हैं और हम लोग का जैसे कोई कंपनीज है, कंपनीज भी इसको यूज करते हैं। आजकल तो AI का जो ये काम है ये आपका हर फील्ड में हो गया, एजुकेशन फील्ड में है, मेडिकल फील्ड में है, सबसे ज्यादा अभी मेडिकल फील्ड में हो रहा है। जैसे हम लोग देखते हैं कि हम लोग पहले क्या होता था, ऑपरेशन से होता था। ऑपरेशन क्या होता था, नॉर्मली चीर फाड़ करके काट करके यहाँ पर किया जाता था, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि एआई टेक्नोलॉजी में मशीन लगाई गई जो कि सारा कुछ आपको क्या होता है मशीन से ही वो सेंस करता है और लगाया जाता है। यहाँ तक कि हम लोग अगर आइस प्रॉब्लम भी होता है तो आइस चेकअप जो होता है वो भी कैसे होता है, कंप्यूटर से ही होता है। वहाँ से चेकअप होता है, वो बता देता है कि आपका आइस कितना डिफेक्टेड है और उसके हिसाब से आपको कौन सा चश्मा या ग्लास लगाना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका एआई का यूज होता है। ठीक है, यहाँ पर फ्यूचर एक्सपेक्ट किया होता है। एआई इज एक्सपेक्ट टू प्ले incredible significant role in the various industries and development will continue to say way like work। तो यहाँ पर सब जगह मिल रहा है, जैसे मैंने बताया कि एजुकेशन सेक्टर हो गया, इंडस्ट्रीज हो गया। ठीक है, तो सारे ही जगह में क्या हो रहा है, आजकल एआई का टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। अभी जैसे हम लोग जो पढ़ रहे हैं या जो कंप्यूटर हम लोग देख रहे हैं, अभी तक का कंप्यूटर में सेंस आया है लेकिन उतना ज्यादा नहीं आया, लेकिन आने वाला दिन में जो डेवलप होने वाला है इस सिस्टम में क्या होगा कि हम लोग जैसे सोच रहे हैं उसका ऐसा मशीन बनाया जाएगा कि हम लोग जो सोच रहे हैं, ठीक है, उसको क्या होगा कंप्यूटर उसको रिकॉग्नाइज करेगा और उसके हिसाब से काम करेगा। ठीक है, चैलेंजेस ऑफ एआई डेवलप इंक्लूड इंश्योरिंग सेफ्टी, एड्रेसिंग बायस। क्या है मतलब, क्या होता है कि जैसे हम लोग एआई को डेवलप जब करेंगे, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन को जब हम लोग बनाएंगे वहाँ पे, तो उसमें सिक्योरिटी का भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंस हो जाता है। जैसे एआई का मतलब क्या, सारा ही हम लोग का क्या कंट्रोल सिस्टम या आप लोग का अगर मेडिकल फील्ड में है तो हम लोग का बॉडीज के सारा कुछ वहाँ पर इंफॉर्मेशन जा रहा है, या अगर एजुकेशन में हो रहा है तो स्टूडेंट्स रिकॉर्ड या टीचर्स रिकॉर्ड डिटेल्स होता है, तो उसका प्राइवेसी जो होता है, जैसे सिक्योरिटी होता है, उसको हम लोग कैसे करके इसको सिक्योर करेंगे। तो ये हम लोग का वहाँ पर चैलेंज है, लेकिन उस पर काम हो रहा है। ये हम लोग के लिए चैलेंज है। एआई इन एवरीडे लाइफ, तो जैसा मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एआई जो होता है कि हम लोग का डेली लाइफ यूज करते हैं। इन डेली लाइफ वी आर यूजिंग द एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। जैसे एग्जांपल मैंने गूगल का दिया, उसी तरह से हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, स्मार्ट वॉच का काम कर रहे हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई कॉल आता है या कोई रिसीव करना चाहते हैं तो हम लोग को आजकल क्या हो गया, स्मार्ट वॉच आ गया, तो वहाँ पर भी हम लोग सारा कुछ देख पा रहे हैं। तो अभी मैं आप लोग को एक वीडियो दिखाने वाला हूँ सेम टॉपिक से रिलेटेड, एआई कैसे करके एजुकेशन में गेम चेंजर कर रहे हैं। तो प्लीज वॉच। What if the future of education isn't in a classroom but in a world of artificial intelligence? Picture this, a world where learning is personalised to each individual, where teachers are aided by AI to better understand students' needs, where special education is revolutionised through technology. That's the intriguing intersection of artificial intelligence and education we are venturing into. The impact of AI on education is far-reaching and profound. It's not just about futuristic classrooms or high-tech gadgets. It's about changing the way we approach learning. Teaching. In this video, we'll delve into the nitty-gritty of this fascinating topic. We'll take a look at real-life case studies, discuss the potential benefits and drawbacks, and explore the future possibilities of AI in education. Personalised learning to special needs education, and ethics and privacy concerns to future predictions, we'll cover it all. So buckle up and get ready to dive in with us as we explore how AI is redefining the landscape of education. Artificial intelligence isn't just a concept of sci-fi movies, it's now a reality in our classrooms. So, what exactly is artificial intelligence, or AI as it's commonly known? Well, it is.
4. AI is a branch of computer science that aims to create intelligent machines capable of learning, adapting, and performing tasks that would normally require human intelligence to recognize and speak. And understanding natural language to making decisions and solving problems, AI is a game changer in virtually every field, including education. In the realm of education, AI is being used in a number of innovative ways. It's powering personalized learning platforms that adapt to each student's unique needs, helping teachers manage their work, and even assisting in the grading process. It's also playing a significant role in special needs education, with AI-powered tools offering new ways to engage and educate students with learning difficulties. But that's not all. AI is also helping to democratize education. With AI-driven platforms, learning is no longer confined to the four walls of the classroom. Anyone, anywhere, can now have access to quality education, all thanks to AI. However, it's not all sunshine and rainbows. The integration of AI into education also presents its own set of challenges. For one, there's the issue of data privacy. With AI systems collecting and analyzing vast amounts of data, how can we ensure the privacy and security of students' information? Then there's the question of the digital divide. While AI can make education more accessible, it can also widen the gap between those who have access to AI-powered learning tools and those who don't. Additionally, there's the concern about AI replacing teachers, but it's important to remember that AI is a tool, not a replacement. It's there to augment, not replace, the role of the teacher. In fact, with AI taking over routine tasks, teachers can focus more on what they do best, inspiring students and fostering their love for learning. AI is not just changing how we teach, but also what we teach. It's opening up new avenues for learning and encouraging us to rethink our traditional education models and pushing us towards a more personalised, inclusive and efficient learning environment. Imagine a classroom where every student gets a personalised learning experience. This is not just a dream, but a reality with AI. Let's take a look at a real-life case study. We're talking about a school in California where artificial intelligence is actively reshaping the learning experience. Here, AI is used to create personalized learning paths for each student. The AI software analyzes the student's strengths, weaknesses, and learning style, then tailors the lessons accordingly. For instance, if a student excels in visual learning but struggles with textual information, the AI adjusts the content to include more visual elements. It's like having a personal tutor, but one that's available around the clock and adapts to the learner's pace and preferences. The impact? Well, the results speak for themselves. The school reported an increase in student engagement, better comprehension, and improved test scores. But it's not just about the grades. Students are now more excited about learning. They are more motivated, more confident, and they feel understood. This is the power of AI in education. AI is not just for the mainstream, it's making a significant difference in special needs education too. Let's delve into a real-life case study to illustrate this point. Take a look at the story of Project Euphonia, a groundbreaking initiative by Google. Project Euphonia is designed to help people with speech impairments interact more easily. Voice-activated devices. This technology shows mental potential in a classroom setting, particularly for students with conditions like cerebral palsy or those who have suffered stroke. Here's how it works. Google's AI is trained on thousands of hours of spoken language from people with speech impairments. This allows the system to understand and interpret atypical speech patterns that conventional speech recognition tools might miss. The results? Remarkable. Students are now able to interact with the devices, ask questions, and even complete assignments using their voice. This technology has opened up a world of possibilities, enabling these students to participate more fully in their education. But the benefits don't stop there. The AI system also provides educators with valuable insights into each student's progress, enabling them to tailor their teaching strategies to best support each individual's learning journey. So, like any technology, AI in education is not without its challenges and potential downsides. Despite the promising benefits we've previously discussed, it's important to shed light on the obstacles and risks that come with integrating artificial intelligence in our educational systems. One of the main concerns is data privacy.
As AI in education often requires collecting and analyzing vast amounts of personal data, this raises questions about how this information is stored, used, and protected. Schools and educational institutions must ensure that they are compliant with privacy laws and that the data is secure from cyber threats. There is also the ethical question of how this data should be used and who should have access to it. Another significant challenge is the risk of widening the digital divide. Not every student, school, or region has the same access to high-speed internet and advanced technological tools. Therefore, the implementation of AI in education could exacerbate inequalities, leaving those without access to these resources at a disadvantage. It's crucial to ensure that technological advancements in education are inclusive and accessible for all. Moreover, there's a concern about the over-reliance on AI, which could potentially lead to a lack of human interaction and personal touch in education. The role of the teacher is not just to deliver information, but also to inspire, motivate, and guide students, something that AI, no matter how advanced, cannot fully replicate. Lastly, this. I hope all of you enjoy the video. So in this video shows how education, AI in education importance. So let's move forward. Calculating impact. So previously old students, what they do to calculate something, they are another table, one table, two table, like that they are counting. But now, with the invention of the calculator, the need of the memorizing table diminished. प्रीवियसली बच्चे क्या करते थे कि काउंट करते थे, लिखते थे, और वो क्या करते थे, टू का टेबल याद करते थे या उसकी कैलकुलेशन करना हो उन लोग काम करते थे. लेकिन जैसे ही क्या हो गया कि कैलकुलेटर वर्क यहाँ पर आ गया, तो उसके बाद क्या हुआ कि सारा काम हम लोग क्या करते हैं कि मोस्ट ऑफ द कैलकुलेटर के ऊपर छोड़ देते हैं. कुछ भी कैलकुलेट करना रहता है तो क्या करते हैं, कैलकुलेटर का यूज डायरेक्टली हम लोग करते हैं. इंटरनेट इम्पैक्ट. Previously, हम लोग को जो भी काम करना पड़ता था, we have to learn something from the book or magazine. But nowadays, came in the description called Google search and era of internet. ठीक है, जैसे ही हम लोग के पास क्या आ गया, इंटरनेट आ गया. अभी हम लोग को अगर कुछ भी टॉपिक या कोई भी चीज जानना रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, बुक को फॉलो नहीं करते हैं, डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, go to the Google and search, find it, and directly हम वहाँ से क्या करते हैं, उसको हम लोग यूज कर लेते हैं. ठीक है. 5. Education of the future. Gone are the days of generic education. AI will empower personalized learning experiences that adapt to the unique needs, abilities, and interests of each student. In the coming decade, AI will revolutionize how we learn, breaking free from the constraints of a one-size-fits-all approach. Tailored learning paths will become the norm, ensuring optimal engagement and success for every student. AI-powered virtual assistants will be invaluable companions, providing instant support, explanations, and problem-solving assistance. The collaboration will know no boundaries as students worldwide connect, collaborate, and explore together through virtual platforms. With AI algorithms facilitating group work and fostering a culture of teamwork, the education landscape is set to undergo a profound and exciting evolution. Number 4. Social welfare and ethical considerations. By 2030, the impact of AI will extend far beyond its technical capabilities. One significant area of transformation will be social welfare and ethical considerations. AI systems will be designed to prioritize the well-being of individuals and communities, ensuring fair and equal access to resources and opportunities. These intelligent systems will help tackle societal challenges such as poverty, healthcare disparities, and environmental sustainability. With AI-driven solutions, we can envision a future where every person has access to quality education, healthcare, and necessities. The ethical frameworks embedded within AI will guide decision-making processes, ensuring transparency, accountability, and safeguarding against biased outcomes. This transformative power of AI
will shape a more inclusive and equitable world for generations to come. Number 3. Advanced personal assistants. AI-powered personal assistants will become our trusted sidekicks, helping us streamline tasks and boost productivity. These intelligent companions will easily anticipate our needs, manage our schedules, and handle routine tasks. From organizing appointments and reminding us of important deadlines to automating mundane chores, AI personal assistants will free up our time, allowing us to focus on more meaningful and enjoyable pursuits. Advanced personal assistants will synchronize with our smart devices, creating a cohesive ecosystem that effortlessly connects and enhances our experiences. With voice recognition technology and natural language processing capabilities, interacting with our AI companions will be as simple as having a conversation. They will understand our commands, preferences, and habits, adapting to our unique needs and providing tailored assistance. What else do we need? Number 2. AI in daily lives. Did you ever wish you had an extra pair of hands to help with household tasks? The era of human-like robots is dawning upon us, and with each passing year, we come closer to a world where our daily routines are intertwined with AI. Imagine waking up to the delightful aroma of freshly brewed coffee, prepared precisely to your liking by your AI-powered coffee maker. Meanwhile, your robot assistant effortlessly navigates your home, keeping it tidy and organized. It handles household tasks such as vacuuming, dusting, and even laundry, freeing up valuable time for you to focus on what truly matters. Aside from household chores, AI-powered cooking assistants revolutionize meal preparation as well. With their vast knowledge of recipes, dietary requirements, and nutritional information, these intelligent helpers guide you through creating culinary wonders. From suggesting personalized meal plans to assisting with complex recipes, they ensure that every dish you make becomes a masterpiece. Number 1. The road to AGI. As we look ahead to the next decade, the development of artificial general intelligence, AGI, stands as a monumental milestone in AI. AGI represents a future where AI systems can understand, learn, and apply knowledge across various tasks, surpassing human capabilities in many aspects. These intelligent machines will exhibit cognitive abilities akin to human intelligence, enabling them to perform complex tasks, make informed decisions, and adapt to new situations. The emergence of AGI will mark a turning point in the history of AI, unlocking unprecedented possibilities and paving the way for groundbreaking innovations. As we have explored AI's incredible advancements and potential in various aspects of our lives, one thing becomes clear: the future is brimming with possibilities. From AI-driven solutions that protect the environment and predict disasters, to AI's role in fostering social welfare and ethical considerations, the impact of AI will transcend technical boundaries and shape a better world. If you have made it this far, comment down below with the word 100%, so we know that you watched the entire video. For more interesting topics, make sure you watch the recommended video that पहले ऐसा नहीं था, पहले हम क्या करते थे, बुक वहाँ पर यूज करते थे और उसमें हम पढ़ाई करते थे। तो यहाँ पर इंटरनेट जो आया तो यहाँ पर क्या इम्पैक्ट हो गया? यहाँ पर जैसे इंटरनेट आ गया तो यहाँ पर क्या होगा कि बुक सेलिंग जो होता है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, बुक सेल्स were reduced and बुक स्टोर would डाउन बिग नंबर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया? जो बुक स्टोर है वो भी धीरे-धीरे क्या हो गया? कम हो गया और सेलिंग उनका वहाँ पर घट गया। However, with the internet revolution spreading like fire society world into the leading solution like smartphone, ठीक है, तो हम लोग क्या आ गया है हमारे पास स्मार्टफोन। जब हम लोग अभी यूज करते हैं मोबाइल फोन, तो हम लोग क्या हो गया, सारा कुछ मोबाइल में आ गया। हम लोग क्या करते हैं, वहीं से इंटरनेट में जाते हैं और वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सर्च करके जो भी टॉपिक होता है हम लोग उससे रिलेटेड वहाँ पर क्या करते हैं, सर्च करते हैं और हम लोग उससे नॉलेज ले लेते हैं। नेक्स्ट, now AI game changer in education for several reasons. क्यों? जो मैंने अभी आपका यहाँ पर मेरा जो टॉपिक है AI गेम चेंजर है एजुकेशन में, वो क्यों है? जैसा कि आपने अभी वीडियो में देखा, वीडियो में दिखाया गया कि कैसे करके वहाँ पर एजुकेशन में इसका इम्पैक्ट गिर रहा है। तो उसका कुछ पॉइंट्स मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ, जिससे आप जानेंगे कि AI गेम चेंजर क्यों है इन एजुकेशन। फर्स्ट पॉइंट क्या आपका यहाँ पर आ रहा है, पर्सनलाइज्ड लर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पर पर्सनलाइज्ड लर्निंग में हम लोग क्या देख रहे हैं, AI can adapt content and teaching methodology to individual student needs, providing a
पर्सनलाइज्ड इफेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग जैसे कोरोना हुआ था, तो इन कोरोना टाइम, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि स्कूल में या कहीं पर कॉलेज में भी बच्चे क्या कर नहीं पा रहे थे, पढ़ नहीं पा रहे थे, स्कूल नहीं जा पा रहे थे। तो हम लोगों ने वहाँ पर क्या किया था कि ऑनलाइन क्लासेस का वहाँ पर डेवलपमेंट किया था। तो हम लोग क्या कर रहे थे, ऑनलाइन क्लासेस उन लोगों को दे रहे थे, तो उन लोग अपने घर में भी बैठ करके पढ़ाई कर पा रहे थे और वो सारा कुछ क्या कर रहे थे, सीख पा रहे थे। तो यही नहीं, नॉट ओनली हम लोग ऑनलाइन क्लासेस दे रहे थे, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ वेबसाइट और ऐप आल्सो। इसमें क्या करते हैं, हम लोग वहाँ पर जाते हैं और हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ से लर्न कर सकते हैं। जैसे हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, तो ट्रेनिंग में हम लोग को क्या करना पड़ता है, वी हैव टू watch the video और watch the content। after that हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर एग्जाम देते हैं और हम लोग क्या करते हैं, get the certificate। so learning from, ठीक है, ऑनलाइन। तो यहाँ पर हम लोग क्या हो रहा है, पर्सनलाइज्ड लर्निंग में क्या हो गया, यहाँ पर एक बेनिफिट आ गया है, जिसमें बच्चे क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली लर्न कर सकते हैं और कुछ नया नया जो इन्वेंशन है वो सीख सकते हैं। सेकंड आता है यहाँ पर आपका इंटेलिजेंस ट्यूटोरियल सिस्टम। इंटेलिजेंस ट्यूटोरियल सिस्टम का मतलब क्या है, जैसे मैंने अभी बताया कि यह क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैन मेड इंटेलिजेंस सिस्टम होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ट्यूटोरियल सिस्टम का मतलब क्या है, ट्यूटोरियल मतलब हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं या हम लोग जैसे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जैसे, तो यहाँ पर एक तरह का सिस्टम यहाँ पर क्या होगा, डेवलप होगा और जो क्या करेंगे, एआई पावर ट्यूटर कैन असिस्ट स्टूडेंट इन रियल टाइम, ऑफरिंग गाइडेंस एंड फीडबैक ऑन देयर वर्क। मतलब क्या हो रहा है कि जो वो काम कर रहे हैं, वो काम क्या कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे इंग्लिश के लिए भी आपका जैसे यहाँ पर योलो यूज होता है, तो इन योलो आल्सो स्टूडेंट play videos and learn something and they get result also, और teachers can get the feedback, वो क्या कर रहे हैं, कितना परसेंट ला रहे हैं, वहाँ कहाँ पे उनका वीक है। सो वहाँ पर भी आपको क्या हो रहा है, एआई टेक्नोलॉजी का यहाँ पर यूज हो रहा है इन ट्यूटर सिस्टम। नेक्स्ट, So one second. So like in our YOLO app, the students have, for their speaking app, to improve their pronunciation, they have this activity in each chapter where the students have to read a passage and the word that they pronounce wrongly, it is shown with red letters. Yes. The correct words are written with green. So the student knows exactly where he is going wrong, which word is pronouncing incorrectly. So that is a big Yes. achievement for the. Yes. It is a gift of AI that we are so using. you are telling right now, so that's why I take an example of YOLO। so क्या आपने जैसे बताया कि जैसे ही स्टूडेंट पढ़ते हैं या प्रोनाउंस करते हैं, अगर रॉन्ग वर्ड वो प्रोनाउंस कर देते हैं तो क्या होता है, रेड में वहाँ पर मार्क्स हो जाता है, और अगर वो सही बोलते हैं तो वो आपका ग्रीन में मार्क्स हो जाता है। सो ये किनके लिए आपका होता है, ये स्टूडेंट के लिए भी है कि स्टूडेंट आपका जान पा रहे हैं कि कौन सा मैंने रॉन्ग वर्ड कर दिया, ठीक है, एंड टीचर ऑल्सो knows that student lacking some words or something, so student क्या करते हैं, इससे लर्न करते हैं and again वो उसको ठीक करने का कोशिश करते हैं। so यहाँ पर भी अपना है। so next, थर्ड पॉइंट है इनहेंस असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब होता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स हम लोग जैसे पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद क्या होता है कि जब कंप्लीट हो जाता है, चैप्टर कंप्लीट हो जाता है या सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तो वी हैव टू टेक एन एग्जाम। तो वहाँ पर उसी को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, असेसमेंट होता है, ताकि हम लोग उसको क्या करेंगे, एआई जैसे असेसमेंट लेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्टूडेंट को जो मैंने बताया है क्या उन्होंने वो सीखा है या नहीं सीखा है, और अगर कितना सीखा है तो कितना सीखा है। तो ये हम लोग उसको असेसमेंट ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इनहेंस असेसमेंट, एआई ऑटोमेट ग्रेडिंग, ठीक है, allowing education for focus on the teaching rather than paper work। जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, पेपर वर्क कर रहे हैं, और पेपर में क्या कर रहे हैं, जैसे कॉपी हम लोग को दे रहे हैं, एग्जाम उन्होंने लिखा, अभी हम लोग उसको चेक करना है और वी कैन गिव द मार्क्स इन मैनुअली। बट क्या होता है, आपने अगर देखा होगा कि जैसे हम लोग गूगल फॉर्म में कोई एग्जाम देते हैं या ऑनलाइन एग्जाम देते हैं, तो इन ऑनलाइन एग्जाम जैसे हम लोग सारा कुछ एग्जाम दे देते हैं और जब हम लोग उसको कंप्लीट करते हैं, जैसे हम लोगों ने वहाँ पर सबमिट किया, जैसे सबमिट करते हैं वी गेट द रिजल्ट। सो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, हम लोगों ने तो कोई मैनुअली वहाँ पर बैठा हुआ नहीं है कि उसको चेक करेगा, ऑटोमेटिकली वो सेट ऑलरेडी किया हुआ रहता है एआई सिस्टम में कि वहाँ पर क्या हो रहा है, जो भी आपका सही आंसर है या जो आपका रॉन्ग आंसर है उसमें आपका मार्क्स नहीं जुड़ेगा, अगर आपका सही आंसर है तो मार्क्स जुड़ेगा। फाइनली वी गेट द रिजल्ट विदाउट यूजिंग मैन पावर। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है, जैसे आपका इनहेंस यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऑटोमेटिकली वो एक्सेस कर लेंगे, तो हम लोग क्या टाइम कंज्यूमिंग टाइम बच जाएगा।
नेक्स्ट नंबर हो रहा है एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी मतलब कैसे क्या वो उस चीज को एक्सेस करेंगे। तो AI tool can make education more accessible for the student with the disability, providing speech to text to speech and other assistant technology। जैसे हम लोग का सारा कुछ सही है, पैर, हाथ, आईज हम लोग बोल सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग कंप्यूटर को आराम से यूज कर सकते हैं। We type in a keyboard, we use the mouse, so we see whatever यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, तो इस कंटेंट को मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर समझ भी पा रहा हूँ। बट ऐसे भी तो बच्चे हैं जो आपका डिसेबल पर्सन होते हैं, जिनका आई से ठीक से नहीं देख पा रहे हैं, या वो बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, या उनके पास मांगते हैंड नहीं है, तो क्या उनके लिए एजुकेशन नहीं है? उनके लिए भी एजुकेशन है। तो उनके लिए यहाँ पर क्या आ रहा है, फीचर्स आ रहा है टेक्स्ट टू स्पीच एंड आपका स्पीच टू टेक्स्ट, मतलब जो हम लोग बोलेंगे उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा, या जो टेक्स्ट में है उसको स्पीच में कन्वर्ट कर देगा। मोबाइल फोन में भी हम लोग देखते हैं, ठीक है, मोबाइल फोन में भी अगर हम लोग उसको फीचर्स होता है टेक्स्ट टू स्पीच का, अगर हम लोग उसको एनेबल कर देते हैं तो हम लोग का जो भी मैसेज आता है या हम लोग जो भी बोलते हैं वो टेक्स्ट को रीड करके हमारे लिए होता है। मान लीजिए किसी को नहीं मतलब सुनाई नहीं दे रहा, ठीक है, सुनाई नहीं दे रहा, प्रॉब्लम आपकी लिखा है, तो वो सुनाई दे रहा है लेकिन वो मतलब देख नहीं पा रहा है, तो उनके लिए क्या हो रहा है, स्पीच जो टेक्स्ट टू स्पीच हो रहा है, ठीक है, जैसे हम लोग टेक्स्ट लिख दिए वो स्पीच कर रहा है, तो वो क्या करेंगे, वो सुन पाएंगे, रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, ठीक है। उसी तरह से कंप्यूटर सिस्टम में भी हम लोग के पास यहाँ पर ऑप्शंस रहता है। जैसे मान लीजिए हम लोग कीबोर्ड यूज करते हैं, तो कीबोर्ड में हम लोगों ने कैप्स लॉक ऑन किया या कोई भी बटन हम लोग ऑन करते हैं, तो हम लोग को क्या होता है, हम लोग देख पा रहे हैं कि माउस चल रहा है या आपका कीबोर्ड का कैप्स लॉक बटन ऑन है। सपोज किसी को नहीं दिख रहा है तो वो कैसे जानेंगे? उसके लिए साउंड इफेक्ट होता है। अगर उस फीचर्स को कंप्यूटर में हम लोग पास होता है, अगर उस फीचर्स को हम एनेबल कर देते हैं, तो अगर हम लोग कैप्स लॉक ऑन करेंगे तो वो एक साउंड देगा, तो जिससे उनको पता चलेगा, जो फिजिकली मतलब नहीं देख पाते या चैलेंजेस होता है, उनको पता चल जाएगा कि ये कैप्स लॉक ऑन है, कि कहाँ पर क्या होता है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग का एक्सेसिबिलिटी में आता है। नेक्स्ट, virtual classroom. AI can enable virtual classroom. The meaning of word virtual. Virtual का मतलब क्या होता है? Which is not real. Yes sir. Virtual मतलब जो हम लोग को मतलब डायरेक्टली नहीं दिखा। जैसे अभी हम लोग जो यहाँ पर अभी जैसे ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो हम लोग डायरेक्टली क्या हो रहा है, फिजिकली हम लोग जैसे यहाँ पर प्रेजेंट, बट ऐसा क्लासरूम यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाएगा जिसमें आपका फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, स्टूडेंट सिटिंग समवेयर एंड टीचर्स टीचिंग समवेयर। तो वहाँ पर हम लोग का क्या होता है, यहाँ पर टीचर जो बताते हैं वो एक। Since the turn of the century, technology has rapidly improved. Our reality is now filled with things that were mere dreams in the past few decades. Seeing how the past is unfolded, I was curious about what the next 30 years would look like. So I did a little digging into what life might look like in 2050 for us. Let's take a look. Nanotechnology. First, let's take a look at nanotechnology. Over the years, scientists have made exciting developments and discovered numerous innovative applications for nanotechnology. As it stands, nanotechnology has the potential to change life as we know it. Experts in the field believe that nanobots will, in the future, be fitted into our brains to connect us to the virtual world more readily and faster. With the use of brain-computer interface technology, the mind and computer will be one, making humans very powerful beings with access to endless information and solutions to problems that the mind wouldn't be able to solve. If nanotechnology reaches that stage, there may be no need for gadgets like phones and calculators. Well, this is very exciting for the student of the future. Looks like math will not be a universal challenge much longer. 3D print technology. The next tech advancement that we can expect in the future is the rise of 3D print technology. 3D print technology is already advanced, but we can expect it to be even more advanced in 2050. Right now, we have 3D printed tools and homes. In the future, we will be able to print more tools and perhaps even some modes of transportation if bigger machines are built. This technology will also become more accessible to everyone who may want a 3D printer, making the possibilities of what can be printed infinite. If the current trend of open source 3D printable files continues, it will not be long before everyone prints their own large objects like furniture and weapons. Well, here's an idea. How about developing an affordable 3D printer for food? That could be the end of world hunger despite global warming. Medical.
Now we go from the extinction of phones to the eradication of death. Well, by 2050, the finality of death may be a thing of the past. With the brain connected to a computer through BCI technology, the information stored in our brains can be transferred into a hard disk like computer files. That means the data, including memories, can be retrieved and uploaded into another being, maybe a more advanced humanoid robot. This way, the best minds in every field will be preserved and able to continue working on innovations. Another improvement to consider in the medical field is that serious diseases like cancer will be cured. The only downside to this development is that every new technology is very expensive when it first comes out, so the rest of us may not have access to this literally life-saving technology for a while. Transportation. Something that we may have access to is transportation. In 2050, transportation will have immensely changed. With experimentation focused on self-driving cars already underway from car manufacturers such as Tesla, it is not much of a stretch to believe that by 2050, the technology for fully automated vehicles will exist. Some notable advantages of such automated vehicles include a drastic reduction in traffic-related deaths because the vehicles will collaborate with traffic control systems. Another advantage is the change in lifestyle that self-driving vehicles will bring. With no need to man a vehicle, people will be free to choose whether to relax or be more productive as they travel. A lot of free time, considering the amount of time spent in traffic. Another interesting development is the Hyperloop One project by Elon, which aims to move the bulk of public transportation underground. With the use of electromagnetic levitation at historic speeds of 310 kilometers per hour, this train presents the opportunity for a faster, cheaper, and cleaner mode of transportation. And if more people opt for it, then there will be even fewer traffic-related incidents. Fuel. Still on transportation, the fuel used in all future transportation modes will be renewable energy. Currently, the world is plagued by global warming and the threat of depleting natural resources, so we do need to be looking at adapting to a more sustainable source of energy. Now, Hyperloop One is exploring electromagnetic levitation, and the automobile industry has also been looking for ways to reduce harmful vehicle emissions. These are all efforts aimed at achieving the goal of stopping the use of carbon-emitting fuels. Besides those, research is being done on the ocean's wind, solar, and thermal energy. One company in particular, Bluerise, a specialist developer of ocean thermal energy conversion, is working on a project that could completely phase out the use of fossil fuels. Hopefully, Bluerise and their colleagues will be successful soon enough to alleviate some of the environmental problems we face. Space exploration. Now, if there is one thing that has been mentioned as a mitigating option for our current environmental challenges, it's space exploration and colonization. Companies like SpaceX and Blue Origin are set on revolutionizing space technology, with goals of spatial exploration and ultimately enabling people to live on other planets in colonies. With all the strides already made, by 2050, space tourism will also be a reality for those who can afford it. The possibilities for holiday destinations will expand to include places like Mars and the Moon. Unfortunately, a trip to orbit will be significantly expensive, making it exclusive for the extremely wealthy, at least at first. Artificial intelligence. Something that may be available for everyone is artificial intelligence. Already more advanced than most of the innovations mentioned here, the development of artificial intelligence will only get better through the years. Experts in the field believe that AI will surpass the processing power of living brains. That wouldn't be scary if it didn't open the door to the robopocalypse. Luckily, scientists still have to figure out how to impart all the important human values into an AI before it can become a part of our everyday life. But the rise of AI will, of course, change the face of the workforce. Not only that, but the job market will also face radical change, and with the way things are going, about half of the world's current jobs will be extinct, taken over by AI machines and robots. In 2050, the world will be more interconnected and even more driven by data than it is now. Some of us will definitely need to consider a career change. Education. As the job market changes, education will also see some significant changes. Already there has been an increase in digital learning, especially during the pandemic. By 2050, completely digital schools will be commonplace. Even if we have physically attended schools, they will have no need for books, using tablets and laptops instead. For higher education, experts believe that more than 70% of the student population will be enrolled in online degrees, making education more globalized. A rather welcome step in the right direction if we are to make good education
education accessible to all, I believe. Online degrees may even be taught by AI-powered robots. At that time, I imagine the robots will be able to prepare course material, give lectures, and mark assignments. Sadly, you may be unable to twist your lecturer's arm, so they give you a deadline extension. The Metaverse. Now we move on to the metaverse. Since Facebook CEO Mark Zuckerberg announced it, virtual reality and AI have been assimilated into our everyday life through the social media giant. For those who may be a bit confused about the metaverse, you're not alone, and you've come to the right place. The metaverse is a virtual reality computer-generated environment in which you can interact with other users through AI-enabled software. So it's about simulation, with avatars representing users. As metaverse functions get more developed, by 2050 it will be able to offer a full virtual experience that includes shopping to travel right from the comfort of your own home. People will have the option to share their virtual experiences with the world. Imagine taking a trip to your favorite holiday destination with your family, only you're not physically there. That's what the metaverse will offer. It seems to me like the more we get connected, the more we stay apart. Money. Next is money. Even though we will still use money, one thing that has been used less and less over the years is cash. Keeping up with that trend, cash will most likely no longer be used in 2050. All transactions will be done virtually, and new modes of financial transactions will emerge because of AI and decentralized finance. As the world slowly starts to adopt those technologies, we may not even have to do our own grocery shopping anymore, making traditional paper and plastic money even less useful. Like Tesla, which orders its own car parts as needed, our automated pantries and refrigerators may order our groceries. No more getting the wrong milk, or even running out of milk. Real estate. Speaking of the automation of home appliances, the homes in 2050 will also be completely automated smart homes. Although smart homes already exist, the developments that will be available in the next few decades will be a great improvement to what we have now. Smart homes in 2050 will have full AI activation functions, allowing the home to sense our moods and requirements without giving it a single command. Additionally, interactive hologram televisions will exist, meaning that you can verbally call up your hologram TV and it will appear right in front of you. The best part, you will never have to look for the remote again, because you can control the TV with your mind using nanotechnology, as discussed at the beginning of the video. So with that, we have come full circle in this video of exploring what our lives will look like in 2050. To be honest, this is just an exercise of imagination, and I realize that not everything discussed in this video will come true. However, you'd have to agree that none of this is too far-fetched either, as humanity has already planted the roots of many of these technologies. Anyways, one thing is for certain with how technology is progressing. I have no doubt that the world will be very different by 2050, but I do hope that our current societal systems and structures will be able to cope with these coming innovations. So, what do you think of these future innovations? Do you think this is what life will look like in 2050? Let me know in the comment section below. If you enjoyed this video, hit the subscribe button and continue watching by clicking on one of the cards on your screen. See you in the next one. जब भी कोरोना आया था तो ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस में टीचर्स अपने घर में हैं और स्टूडेंट अपने घर में, लेकिन क्या हो रहा है कि वहाँ पर एक एनवायरनमेंट, एक क्लासरूम बनाया गया जहाँ पे जो भी टीचर्स बता रहे हैं वो सारे स्टूडेंट को समझ में आ रहा है, जस्ट लाइक जैसे फिजिकल जैसे हम लोग यूज कर रहे हैं उसी तरह से, लेकिन वो फिजिकली प्रेजेंट वहाँ पर नहीं होता है। तो यहाँ पर वही होगा प्लेटफॉर्म फैसिलिटेड रिमोट एजुकेशन। रिमोट एजुकेशन का मतलब वही होता है जैसे रिमोट मतलब कहीं पर हम दूसरे जगह में हैं, स्टूडेंट सब में तो वहाँ पर भी हम लोग का एक्सेसिबिलिटी हम वहाँ पर दे रहे हैं, वर्चुअल क्लासरूम क्रिएट कर रहे हैं फॉर द स्टूडेंट। डेटा एनालाइज, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेटा एनालाइज, डेटा एनालाइज का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए वास्ट नंबर ऑफ डेटा है, ठीक है, डेटा का मतलब एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए हम दे रहे हैं कि स्टूडेंट्स रिकॉर्ड, सपोज स्टूडेंट का स्कूल में बहुत सारा मान लीजिए रिकॉर्ड्स दिया हुआ, अभी हमको क्या करना है, यहाँ पर उसको एनालाइज करना है। एनालाइज क्या करना है, एनालाइज यही करना है कि सपोज हमको ये देखना है कि फ्रॉम द क्लास प्री नर्सरी टू क्लास 9 और प्री नर्सरी टू 12 जो स्टूडेंट है उसका परफॉर्मेंस कैसा है। सो हम लोग क्या करेंगे, डेटा को एनालाइज करेंगे और डेटा को एनालाइज करके फाइनली हम लोग देखेंगे कि जो पर्टिकुलर स्टूडेंट जिनका आप देखना चाह रहे हैं तो वो स्टूडेंट कहाँ पे वीक हो गया। जैसे मान लीजिए प्री प्राइमरी में सही थे, फिर सेकेंडरी में या प्री प्राइमरी में अच्छे नहीं थे, धीरे धीरे करके वो इम्प्रूव कर गए या डाउन हो गए, तो उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं और ट्रैक करके उसको इम्प्रूव करेंगे, हम उसमें आगे काम कर सकते हैं। एंड इम्प्रूविंग एजुकेशन पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस, यहाँ पर आप देख रहे हैं
नेक्स्ट लैंग्वेज ट्रांसलेशन AI कैन ब्रेक डाउन लैंग्वेज बैरियर। ये मैंने अभी आप लोग को फर्स्ट में ही डिस्कशन किया था कि जैसे ही AI टेक्नोलॉजी आने के बाद हम लोग के पास क्या हो रहा है कि जो लैंग्वेज बैरियर होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग झारखंड से हैं, सो हम लोग हिंदी जान रहे हैं, इंग्लिश भी जान रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे कोर में इनको सिर्फ हिंदी आता है, इंग्लिश नहीं आता है। सो वो क्या करना चाहेंगे कि वो अपना हिंदी में कुछ जानना चाहेंगे, हिंदी में कुछ सीखना चाहेंगे। यहाँ पर और भी जैसे बंगाली है या अदर लैंग्वेज है, तो सारे अपना लैंग्वेज में सर्च करना चाह रहे हैं। तो जैसे हम लोगों ने गूगल जब यूज करते हैं, तो वहाँ पर आप देखे होंगे वहाँ पर लैंग्वेज सिलेक्शन का ऑप्शन रहता है। तो पहले ऐसा नहीं था, पहले इंग्लिश नहीं होता था, लेकिन अभी क्या हो गया कि सारे लैंग्वेजेस में ऑलमोस्ट अवेलेबल है। सो यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर, या कैन ब्रेक डाउन द लैंग्वेज बैरियर allowing students to access education content in their preferred language। अगर उनको हिंदी में पढ़ना है हिंदी में पढ़ेंगे, अगर इंग्लिश में पढ़ना है इंग्लिश में पढ़ेंगे, बंगाली, उर्दू, तमिल, तेलुगु जिसमें भी पढ़ना है वो अपना लैंग्वेज में उनको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ईयरली इंटरवेंशन। ठीक है, यहाँ पर है आपका AI कैन आइडेंटिफाई द स्टूडेंट एंड टिप्स ऑफ द फॉलोइंग बिहाइंड द प्रोवाइडिंग ईयरली इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज टू हेल्प देम कैच अप। मतलब ये तो मैंने अभी प्रीवियस डिस्कस कर ही दिया कि जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है आपका ईयरली इन्वेस्टमेंट, इसमें क्या करेंगे, इसमें स्टूडेंट को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि स्टूडेंट कहाँ पे लैग कर रहे हैं, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूजिंग हेल्प ऑफ द AI से इंटेलिजेंस। नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है कंटेंट क्रिएशन। तो कंटेंट क्रिएशन क्या होता है, सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे व्हाट इज मीन बाय कंटेंट। कैन एनीबॉडी से कंटेंट मींस व्हाट इज मीन बाय कंटेंट? कंटेंट क्या होता है? Content like in a class, what content we are going to deliver, what things we will cover, what topics we will cover. Yes, right. What topic we have to talk? So content क्या होता है, जैसे बेसिकली कंटेंट क्या होता है, हम लोग मान लीजिए जो पढ़ा रहे हैं, जैसे कोई टॉपिक में हम लोग स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं या कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो वो जो चैप्टर में यहाँ पर उनको लिखा हुआ रहता है वो हम लोग का क्या होता है, कंटेंट होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली क्या करते हैं, बुक से भी पढ़ते हैं और हम लोग क्या करते हैं उसमें अपना कुछ मिला देते हैं, मिक्स करते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए हम लोग डायरेक्टली बुक से पढ़ाने जाएंगे तो क्या होगा कि स्टूडेंट हो सकता है कि उसमें इंटरेस्ट ना दिखे, क्योंकि स्टूडेंट को इंटरेस्ट अगर लाना है तो हम लोग उसमें कुछ मिक्स करना पड़ेगा। जो पढ़ाई हम लोग करा रहे हैं उसमें थोड़ा मिक्स करके उनको मतलब रियल लाइफ, मतलब मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि रियल लाइफ से जैसे ऐड करें, तो रियल लाइफ से उसको अगर ऐड कर देते हैं तो स्टूडेंट क्या होगा, बेटर लर्निंग करेंगे और उसको क्या होगा कि वो भूलेंगे नहीं। क्योंकि अगर हम लोग किताब से पढ़ा देते हैं तो वो क्या करेंगे, पढ़ेंगे, रटेंगे, एग्जाम में भूलेंगे, देन वो कुछ रिमेंबर नहीं रखा। लेकिन अगर उनको हम लोग रियल लाइफ से उसको ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो ज्यादा देर तक रिमेंबर कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो कंटेंट क्रिएशन में बोलना चाह रहा हूँ, तो कंटेंट क्रिएशन यहाँ पर क्या करेगा, AI क्या काम करेगा, AI कैन असिस्ट एजुकेशन इन जनरेटिंग एजुकेशन मटेरियल एंड ऑटोमेटिक एडमिनिस्ट्रेटर टूल। मतलब क्या होता है, जैसे कंटेंट अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, कंटेंट हम लोग खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं या फ्रॉम द बुक से प्रिपेयर कर रहे हैं। लेकिन AI टेक्नोलॉजी क्या होगा यहाँ पर जैसे आप क्या कर रहे हैं, कुछ भी आप बोलेंगे या कोई टॉपिक पे आप सर्च करना चाह रहे हैं, तो ये आप काम नहीं करेंगे, वो ऑटोमेटिकली हम लोग के लिए खोज के ला देगा। अभी बहुत सारा ऐप आ गया, नया टेक्नोलॉजी आ गया है, जिसमें हम क्या करेंगे कि जो टॉपिक में रिलेटेड हम सर्च करना चाहते हैं, जैसे टॉपिक बोल देंगे एग्जैक्टली हम लोग को एग्जैक्टली वही मिलेगा। ऐसा नहीं, गूगल पे हम लोग अगर सर्च करते हैं तो हम लोग को क्या होता है, बहुत सारा रिजल्ट आएगा, 1000 लाख और करोड़ रिजल्ट आ जाता है। तो वहां से हमको क्या करना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है, कुछ कंटेंट इज बेस्ट, कुछ कंटेंट इज बेस्ट। तो हम लोग को फिर से अपना ही मतलब हम लोग अपने से उसका काम करना पड़ता है। लेकिन क्या हो रहा है कि अगर आप चाह रहे हैं कि कोई ऐसा सिस्टम बने कि वो मेरे लिए जो हमको इम्पोर्टेंट है, हमको उतना ज्यादा जरूरत नहीं है, 1000 ऑफ रिकॉर्ड हमको नहीं चाहिए, वी ओनली नीड द कंटेंट, प्रॉपर कंटेंट, स्पेसिफिक कंटेंट चाहिए। तो ऐसा भी अभी सिस्टम डेवलप हो गया है जहाँ पे हम लोग जो टॉपिक पे सर्च कर रहे हैं एग्जैक्टली हमको वही टॉपिक, ज्यादा इतना नहीं कि 1000 मिल जाएगा, डायरेक्टली एग्जैक्टली हम लोग को वही टॉपिक मिल जाएगा। तो वहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, टीचर्स क्या कर सकते हैं, अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। स्टूडेंट हमसे उन लोग को भी जो क्वेश्चन से रिलेटेड या कहीं से डाउट होता है तो उन लोग एग्जैक्टली उसका आंसर खोज सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया कंटेंट क्रिएशन। नेक्स्ट आपका आ रहा है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। AI कैन सपोर्ट कंटिन्यूअस एजुकेशन एंड स्किल ऑफ बाय
लोग क्या जो भी यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, ये लाइफ टाइम हम लोग के लिए क्या करेगा, लाइफ टाइम लर्निंग के लिए हम लोग को एनेबल करेंगे। जैसे कभी कभी हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, एआई का काम मतलब आप थोड़ा सा देखें, ये वाला प्रिंसिपल भी है। जैसे मान लीजिए आप लोग कोई सोशल मीडिया चला रहे हैं, अभी सोशल मीडिया चलाते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं, कहीं हम लोग शॉपिंग में चला जाते हैं, शॉपिंग मान लीजिए हम लोग फ्लिपकार्ट में कहीं शॉपिंग कर रहे हैं, जबकि मैंने फ्लिपकार्ट में जो यहाँ पर ओपन किया है और मैंने फ्लिपकार्ट का पेज को लाइक भी नहीं किया इन सोशल मीडिया, बट क्या होता है कि कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि जो भी मैंने वहाँ पर सर्च किया था, सपोज मैंने मोबाइल सर्च किया था, सो यू कैन सी मोबाइल प्रोडक्ट आ गया, मतलब आप लेना चाहते हैं, आपने जो सर्च किया था वहाँ पर आ गया, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जो कुछ बोलते हैं उसको भी फॉलो करके हम लोग दिखा देता है, उसी से रिलेटेड कंटेंट आ जाता है, तो ये कैसे एडवेयर से हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो भी हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग क्योंकि जब भी हम लोग कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें सारा परमिशन को अलाउ करते हैं, तो वहाँ पर एक ऑडियो परमिशन भी अलाउ होता है, तो जैसे हम लोग ऑडियो परमिशन अलाउ कर देते हैं तो हम लोग जो बोल रहे हैं, ठीक है, तो उसको वो फॉलो करके उससे रिलेटेड सर्च हम लोग को दे देता है, और जैसे मैंने बोला कि अदर ऐप भी हम लोग यूज कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड हम लोग को मिलने लगता है कि वही हम लोग सर्च किए क्या किए, वो हम लोग को यहाँ पर दिखने लगता है। तो उसी तरह से अगर कोई स्टूडेंट है, जैसे मान लीजिए कोई ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं या कोई कोर्स ज्वाइन किया है स्टूडेंट, तो वो क्या करेंगे, जैसे ही वो कोर्स को कंप्लीट करेंगे, आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स क्या करेंगे, यहाँ एआई सिस्टम जो बना हुआ रहेगा वो क्या करेगा कि स्टूडेंट को लर्निंग का प्रोसेस को देखते हुए कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट किसमें आ रहा है, सपोज स्टूडेंट इंटरेस्ट इन कंप्यूटर और आर्ट्स और एनी टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक, तो जहाँ पे उनका इंटरेस्ट जा रहा है वो क्या करेगा, आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स और ड्यूरिंग द कोर्स वो क्या करेगा, सजेस्ट करेगा, सो दिस कोर्स इज बेटर फॉर यू, दिस कोर्स इज बेटर फॉर यू, सो वहाँ पर क्या होगा, प्रोवाइड किया जा रहा है कि ये कोर्स आपके लिए बेटर है, इस कोर्स को आपको करना चाहिए। फिर वो कोर्स कंप्लीट करेंगे, अगेन उसको क्या होगा, यहाँ पर फिर से उसको यहाँ पर मिलने लगेगा, रिकमेंडेशन मिलने लगेगा कि आपके लिए ये कोर्स बेटर है। तो इस तरह से आपका एजुकेशन में हम लोग एआई को यहाँ पर मिलाया गया, और यहाँ पर मेरा जो टॉपिक था एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे करके एजुकेशन में गेम चेंजर होगा, तो ये मेरा टॉपिक आज का है। थैंक यू ऑल।